back to my channel. This is Deeksha, and this video is about a topic which is from semester 1, paper 1 of b.Ed. You can relate with it no matter which university you belong, it will be useful to you. So this lecture will be about education. What do you mean by education? Some meaning, some concept, its relevation, and some of the definitions that has been provided by the great philosophers to interpret this meaning of education. So let's get started with the video. So what do you mean by education? So firstly we will give some intro about education. एजुकेशन वो टूल है जिससे एक अनजान बच्चा दुनिया में एडजस्ट करता है. सो माँ बाप ही एक बच्चे के पहले टीचर माने जाते हैं. दैन वो स्कूल में जाता है, वहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है जिससे बच्चा डेवलप करता है और सोसाइटी में एडजस्ट करता है. सो एजुकेशन इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड और एन एडल्ट रिक्वायर्स नॉलेज, स्किल एंड साउंड एटीट्यूड. एजुकेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. जैसे कि एजुकेशन जब स्टार्ट होती है, बच्चे पीजी क्लास में होते हैं, उन्हें डायरेक्टली लैंग्वेज में लिखना नहीं बताया जाता है, उन्हें अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज दी जाती है. सो दैट्स वाई इट इज़ सेड एजुकेशन इज़ सिस्टमेटिक प्रोसेस. एजुकेशन एक वो प्रोसेस है जिसकी वजह से एक बच्चा और एक बड़ा नॉलेज गेन करता है, स्किल्स डेवलप करता है. सो और एटीट्यूड मतलब इंटेलिजेंस अपनी डेवलप करता है, सो दैट ही कैन एडजस्ट वेल इन द सोसाइटी. एजुकेशन इज़ अ टूल विच प्रोवाइड्स पीपल डिफरेंट टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन अबाउट देयर राइट्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी. एजुकेशन वो टूल है जो हमें डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स प्रोवाइड करता है, सो दैट वी कैन एडजस्ट आवरसेल्फ विद अ बेटर लाइफ. ऑल्सो वी कैन be responsible member towards our family, friends and society. Education has been defined as panacea of all evils of society or an individual. Education को एक रेमेडी माना गया है जिसकी वजह से हम जो भी सोसाइटी में एविल्स हैं लाइक इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स और सती प्रथा जैसे थी, दीज आर द सम सोशल एविल्स. सो एजुकेशन के ही वजह से हम उन्हें एरेडिकेट कर पा रहे हैं और कर पाएंगे. So next is education is utilized in 3 senses: knowledge, subject and process. Education को आज की मॉडर्न ज़माने में नॉलेज की तरह लिया जाता है, सब्जेक्ट की तरह भी लिया जाता है और इसे प्रोसेस माना जाता है. सपोज वी आर स्टडिंग इन 10th or 12th class, right? So if we are taking this education as just for our mark sheet or numbers, then education is treated as a subject only. But when we apply this knowledge in reality, then it is considered as real knowledge, and whatever the knowledge we have gained through this process, it encompasses education. Education has been defined as a process of waking up to life and mysteries. It tells us how to think and how to take decisions. It is a tool of development of innate abilities, increment in knowledge, arts and behavior changes. एजुकेशन को वो एक प्रोसेस है जो हमें दुनिया की मिस्ट्रीज और लाइफ से रिलेटेड जितनी भी मिस्ट्रीज हैं सॉल्व करने में मदद करता है. एजुकेशन वो टूल है जिसकी वजह से हम अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है भी डेवलप नहीं हैं और जो जिनसे हम अनजान हैं वो हमें डेवलप करने में मदद करती हैं. सो मीनिंग ऑफ एजुकेशन. दिस वर्ड एजुकेशन इज derived फ्रॉम द 2 words. फर्स्ट इज ई and then deco. E here means insight and deco means to develop. So this combinedly education means to develop something from inside. Etymologically, the word has been derived from the 3 of these words: educare, educere, educatum. So educare means to nourish or to bring out. Whenever we bring out something good from the child, it is termed as education. Educere means to lead out or to draw out. That is to draw out something good which has been there in the child as innate quality. Educator means act of teaching or training. Educatum here refers to act of teaching of the pupil by a teacher. Next is in Indian language it is supposed that education means शिक्षा. So शिक्षा को हमने सास वर्ड से लिया है which means to develop, to control, to order, to direct or to rule. सास means शिक्षा and शिक्षा means to control or disciple. That is here Shiksha means the pupil will be bound to the teacher. Another Sanskrit term is Vidya, which has been originated from Vid
एंड इट मीन्स टू एक्वायर नॉलेज। विद्या को भी हम एजुकेशन की तरह लेते हैं, इसकी मतलब होता है to acquire knowledge. Sometimes the Greek word pedagogy is also used for education, which means to lead the pupil. आप तो जानते हैं, अगर B.Ed आप परस्यू कर रहे हैं, pedagogy is most often used word in our subject. So education here, it is also used instead of education, which means to lead the pupil or the children of the class. In the modern time, education has acquired two of the meanings. Let's see what are they. An institutional instruction given to student in school and colleges and formally. एक एजुकेशन जो हमारे अब मॉडर्न एरा में प्रेवलेंट है, वो इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्शन की तरह भी लिया जाता है. एंड सेकेंड मीनिंग इज अ पेडागोगिकल साइंस स्टडीड बाय द स्टूडेंट ऑफ द एजुकेशन. जो हम B.Ed में जितने भी सारे बच्चे होते हैं वो एजुकेशन को एक पेडागोगिकल साइंस की तरह लेते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन. So firstly we will discuss the meaning, as we have already known that education is very important in case of our development, no matter which type of development you are referring to, whether it's physical, mental, spiritual and social. Education is categorized into two meanings. Let's see what are they. First is narrow meaning. Here narrow meaning is supposed to be school institute instruction. So here it is equated with school instruction. Whatever knowledge we gain in school is supposed to be education. Next is wider meaning, and here education is called as growth and development. This is suppose that wider meaning of education goes on till our death. So let us clear these meanings with some of the definitions of great philosophers. Education is a process in which and by which knowledge, character and behavior of the young ones are shaped and molded. So education ही वो process है जिसकी वजह से हमारी knowledge, character और behavior अच्छे से ग्रो कर पाता है और एक बेहतर इंसान बनने में हमें मदद करता है. In the second, it can be taken to mean any concisely directed efforts to develop and cultivate our powers. So जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला है, अगर हम एजुकेशन को नैरो सेंस में लेंगे, ये इसका मतलब है कि कोई भी डायरेक्टेड एफर्ट्स, कोई भी हम डायरेक्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं लाइक टीचिंग एंड लर्निंग. सो इसकी वजह से ही हमारे जो अंदर जो बर्ड्स से है क्वालिटीज़ हैं हमारे अंदर, उन्हें हम डेवलप और कल्टिवेट कर सकते हैं. In the next is, education is equivalent to instruction. It consists of all the specific influences designed in school to bring out the development. So next is education is in the narrow sense, education is equivalent to instruction. It consists of the specific influence design. So education here mostly consists of the influences or the efforts that has been designed by the schools to bring out the development of the child in the best way. Some of the definitions to clear the wider meaning of education. Wider मतलब कि जो एजुकेशन स्कूल के इंस्ट्रक्शन के बियॉन्ड है, जो हमारी लाइफ में निरंतर चलती रहती है. Education in the widest sense include all the influences which act upon an individual during his passage from cradle to grave. जब भी हम जन्म लेते हैं और हमारी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें सबको एजुकेशन बोला गया है. If we are taking the wider meaning of education. Education in the broadest term is the means of social continuity. So education, डम्बाइल ने बोला है, एजुकेशन ही वो माध्यम है जिसकी वजह से ही सोशल कंटिन्यूटी और सोशलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है. बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैंस बॉडी एंड स्पिरिट. जेएनडीयू ने बोला है कि एजुकेशन से ही हम ऑल राउंड डेवलपमेंट चाइल्ड में कर सकते हैं और उसकी वजह से ही एक आदमी की बॉडी और माइंड और उसकी सोल डेवलप कर सकती है. एजुकेशन इन द वाइडर सेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट बिगिंस फ्रॉम बर्थ एंड एंड विद द डेथ ऑफ द चाइल्ड. सो एस मैकेंजी ने बोला है कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मीन्स इट गोज ऑन एंड गॉन अंटिल आवर डेथ. ये हमारी बर्थ से स्टार्ट होती है और डेथ तक में एंड हो जाती है. दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन सेड एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाय एस मैकेंजी. Some of the definitions of education. So हम अब एक ऐसी definition तो है नहीं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो और
उसे ही बोला गया हो कि ये एक्चुअल डेफिनेशन है एजुकेशन की. सो देयर आर लॉट्स ऑफ मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन इन द entire world. Different people define different things about education. So that's why we will try to clear the meaning of education by reading some of the definitions of great philosophers. Education enables the mind to find out the ultimate truth by emancipating us from the lust and providing us the wealth of inner light and love and gives significance to our life. सो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला है एजुकेशन ही हमारी माइंड को ट्रुथ की तरफ डायरेक्ट करता है और हमारी माइंड को लस्ट और वेल्थ की एक्विजिशन की जो निगेटिव थिंकिंग है उसे हटाता है और अच्छे थॉट्स डेवलप करता है जो कि हमारी माइंड को डेवलप करते हैं और हमारी लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं. नेक्स्ट इज एजुकेशन इज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रा आउट दैट इज विद इन. अरविंद घोष ने कहा है एजुकेशन ही वो टूल है जो हमारी सोल को मदद करता है टू डेवलप हिज बेस्ट क्वालिटीज आउट ऑफ his body that is already there. Education is the manifestation of divine perfection already existing in man. स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि एजुकेशन ही मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन है जो हमारे शरीर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट इज एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स अ मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस. सो ऋग्वेदा बोलता है एजुकेशन ही लोगों को सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर एंड सेल्फलेस मीन्स एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स अ पर्सन सेल्फलेस so that he can love all the people, all the species that is living in this world. Next is education is that whose end product is salvation. जो उपनिषद है उन्होंने बोला है वो बोलते हैं ये दीज आर द फिलोसफिकल टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदास पीरियड और वी कैन से वैदिक पीरियड. ओके सो यहाँ पे लिखा है एजुकेशन इज दैट थिंग हुज एंड प्रोडक्ट. एजुकेशन का जो एंड प्रोडक्ट है एजुकेशन के ही थ्रू हम सैल्वेशन मतलब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं. नथिंग इज मोर प्यूरिफाइंग देन ऑन द अर्थ देन द विजडम. भगवद गीता ने भी बोला है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अर्थ जो प्यूरिफाई हो सिवाय की विजडम की वजह से. Wisdom. Education means training of the country and love of the nation, according to Kautilya. Next is education is the child development from within, according to Rousseau. Education is the development of good moral characters. Education ही वो माध्यम है जिसकी वजह से हम अपने चरित्र को और अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं according to the social things. J.F. Harvard. Education is the harmonious and progressive development of all the innate powers and faculties of man's physical, intellectual, and moral physiology. According to the physiology, it is the harmonious and continuous development of all the innate power. Innate power means the powers which we already have since our birth, but उन्हें recognition नहीं मिलती है तो वो डेवलप नहीं कर पाते हैं. If we are getting the correct education and so that we can गेट टू नो अबाउट वॉट आर आर क्वालिटीज़. अगर हमें एजुकेशन ही नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कौन से टैलेंट हैं और कौन से नहीं. नेक्स्ट इज एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एजुकेशन इज नॉट लर्निंग और नॉट जस्ट नियर इंस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग दैट वी नीड टू इनगल्प आवरसेल्फ. ओके बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड. ये एजुकेशन ही वो चीज़ है जो हमारे माइंड को ट्रेन करती है, हमें माइंड को सोचने पर मजबूर करती है. एजुकेशन ये नहीं है कि रट्टा मार लिया और हो गया ख़त्म. एजुकेशन ही वो है जो हमें लिखी हुई चीज़ों के बियॉन्ड जाना पड़े, वही चीज़ एजुकेशन है. इट इज़ कम्प्लीट लिविंग. अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड स्पेंसर एजुकेशन ही कम्प्लीट लिविंग है और ऐसा भी बोला जाता है एजुकेशन इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ एजुकेशन. एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एजुकेशन. और हम लाइफ देख ही सकते हैं जानवरों की, उनकी दुनिया में कोई एजुकेशन नहीं होती है तो वो डेवलप ही नहीं कर पाते हैं. जैसे पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं. बट ह्यूमन्स को देखिए they are taking education and they are developing more and more things according to their convenience so that they can adjust more better in this society. So education is something which is very important in our life. So that's it for today and thank you for watching and don't forget to like, subscribe and share. So stay tuned. Okay, bye.